السلام علیکم ناظرین. نیوٹریشن انٹرنیشنل، منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز اور دیگر حکومتی اداروں کی طرف سے منعقد کیا گیا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے اوپر ریسرچ بیسڈ پروگرام رمادہ ہوٹل اسلام آباد میں منعقد کیا گیا. اس پروگرام کا مقصد عوام میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی بیماری کو اجاگر کرنا اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا تھا. یہ پروگرام ویکلی آئرن اینڈ فولک ایسڈ سپلیمنٹیشن ان پاکستان کی ریسرچ کے اوپر منعقد کیا گیا تھا. اس پروگرام میں اس ریسرچ کے فوائد بتائے گئے اور دیکھا گیا کہ اس ریسرچ سے ہمیں کیا جانکاری حاصل ہوئی ہے. یہ بیماری میل نیوٹریشن یعنی کم غذا ملنے کی وجہ سے نوجوان بچوں میں پائی جاتی ہے. پاکستان میں 48% بچے اس بیماری کا شکار ہیں اور اس 48% میں سے 54.7% لڑکیاں ہیں. اس پروگرام میں حکومت پاکستان کی طرف سے کی گئی اس ریسرچ اور اس ریسرچ کے نتیجوں کا خلاصہ کیا گیا. آئیے جانتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں. Pakistan is suffering from high burden of malnutrition, especially among women and children. And for the last almost 2.5 decades, situation has not improved much. There are multiple reasons for that. Apart from the low public health resource allocation, lack of geographic coverage, and comprehensive approach to address malnutrition for children. There are other reasons also. We were just focusing on the children under 5, children under 2, but forgetting the actual root cause of malnutrition among children. And this basically came into limelight maybe about 7 and 8 years back, in context of neonatal mortality also. 41 children dying within 24 hours out of the 1,000 live births. So the background was that our mothers are malnourished. Because our mothers are malnourished, macro and micronutrient both, so they are unable to develop or give birth to the healthy and nourished children. So the children who are born premature, underweight, or with other disease burdens, so either they are not going to survive the first day, the first month, or the first year, or if they survive, then they are malnourished. So until and unless we are going to address the root cause of child malnutrition, we will not be able to address that. And when we were talking about maternal malnutrition, we also found out that our adolescent girls, to be mothers for the future, are also malnourished. So with this context, the focus shifted gradually from child malnutrition to maternal malnutrition to adolescent malnutrition. Not shifted, we included that in the whole ambit of malnutrition of our population in Pakistan. جہاں تک تعلق ہے ویفا پروجیکٹ کا تو I have been observing this since the piloting of this project in 2019. سب سے پہلے جب یہ پائلٹنگ کے لیے آیا تو 50 اسکولوں کا جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن کیا گیا، جس میں یہ فوکس کیا گیا کہ ایڈولسنٹ گرلز کو فوکس کیا جائے، ٹارگٹ کیا جائے. تو اس وقت تقریباً 6500 کے قریب گرلز کا انتخاب کیا گیا. اس سلسلے میں سب سے پہلے جو چیز تھی وہ کیپیسٹی بلڈنگ تھی. جب تک ٹیچرز جو ہیں وہ اس پروجیکٹ میں انکلکیٹ نہ کی جاتی اس وقت تک یہ پروجیکٹ کامیاب ہونا ناممکن تھا. نیوٹریشن انٹرنیشنل نے اور چینج کنسلٹنگ لمیٹڈ جو ہے ان کی فنڈنگ سے یہ ایک بہترین پلان کیا گیا. اس میں سب سے پہلے تمام اسکول سے ایک ٹیچر کو سلیکٹ کیا گیا جن کو TOTs کرائے گئے، ان کی ٹریننگ کرائی گئی. اور وہ جو ٹیچرز تھے انہوں نے جا کے اپنے جو کلیگ ٹیچرز تھیں ساروں کو ٹرین کرایا. یہاں تک بھی بس نہیں کی گئی بلکہ اس کو مزید ٹرکل ڈاؤن کیا گیا. تمام بچوں کو انوالو کیا گیا، ان کی پیئر گروپنگ کی گئی تاکہ جو پیغام ہے، جو میسج ہے، جو اس کی ایسنس ہے وہ ٹرکل ڈاؤن پراپرلی کمیونیکیٹ کی جا سکے. تو
तो तमाम बच्चों को किया गया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई गई, जिसको एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम ने, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की टीम ने और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने प्रॉपरली मॉनिटर किया, सुपरवाइज किया, बल्कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट दे टेक दी तमाम जो एक्टिविटीज़ है उसको कामयाबी की तरफ लेके गए। जब तमाम प्रोसेस हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बाकायदा रोल प्ले कराया गया, असेंबली में सेशन कराए गए, ऐसे कंपटीशन कराए गए, स्टोरी राइटिंग की कंपटीशन कराए गए, ताकि तमाम बच्चों को यूज़ किया जा सके कि वो इस चीज़ को एक अजीब या एक नई चीज़ ना लें, बल्कि उसको अपनी सेहत के लिए एक लाजमी हिस्सा लें। उसके बाद आपको पता है चूँकि लोधरा एक रिमोट एरिया है, वहाँ पे रिलीजियसली भी इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया जाता है। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की टीम ने रिलीजियस लीडर्स को भी ऑन लूप लिया ताकि मुआशरे में भी उसको एक्सेप्ट किया जा सके। उसके बाद जी सप्लीमेंटेशन का जब प्रोसेस हुआ तो वो भी प्रॉपरली प्लान था। 3 मंथ का एक पहले साइकिल चलाया गया साइकिल, उसमें तमाम बच्चों को 12 टैबलेट्स दी गई। उसके बाद 3 मंथ का गैप दिया गया, उसके बाद 3 मंथ का फिर एक साइकिल चलाया गया। तो जब ये प्रोसेस ख़त्म हुआ तो इन द मीनवाइल तमाम टीम प्रॉपरली उसको सुपरवाइज करती रही, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता रहे, रजिस्टर बनते रहे, ताकि ये देखा जा सके कि कितने % जो है ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है फील्ड में। जब उसकी एंड इवैल्यूएशन हो गई तो रिज़ल्ट दिखे तो वो बड़े शॉकिंग बल्कि हैरत अंगेज तौर पर खुशगवार थे कि बच्चे ना सिर्फ फिज़िकली एक्टिव थे बल्कि वो बड़े रिसेप्टिव हुए, उनके स्कूल के रिजल्ट्स इंप्रूव हुए, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत इंप्रूव हुई। उसके बाद उनकी जो क्लासरूम की पार्टिसिपेशन थी ख़ास तौर पे वो, और उसके बाद स्कूल के अंदर जो टाइम टू टाइम को करिकुलर एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, स्पोर्ट्स हो गई, उसके बाद बज़्म अदब हो गया, उनमें उनकी पार्टिसिपेशन का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। High Commissioner of Pakistan, Dr. Nazir Ahmed, Chief Nutrition Planning Commission, Islamabad, Dr. Naveed Akbar, DG, CCT of BISP, Ministry of Poverty Alleviation and Social Safety, Dr. Khwaja Masood Ahmed, National Coordinator, Nutrition and National Fortification Alliance, Ministry of National Health Services Regulation and Coordination, and the respective DGs of Health Services from Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Balochistan, the Provincial and District Health and Nutrition and Education officials, esteemed members of the UN and INGO colleagues, donor community and civil society, representatives from the media, and our country director, Dr. Shabina Raza, and the representatives and team from Nutrition International and partners. You've gathered here today to share program progress, best practices, and learnings from the WIFAS pilot in Lodram District of Pakistan with national and provincial governments, development partners, and stakeholders. And I'd also like to share with you today how this work fits into our global adolescent health and nutrition work at Nutrition International. In order to demonstrate the globally tested model of WIFA's weekly iron, folic, and acid supplementation for in-school adolescent girls in actual field settings in Pakistan, our project was implemented in the District of Lodram by District Health Authority and the District Education Authority, with technical and financial support of NI through its implementing partner, Change Consulting. And this project is aligned with the federal and Punjab government's efforts in anemia reduction for adolescent girls under the technical oversight and leadership of the Nutrition Wing of the Ministry of National Health Services Regulation and Coordination and Integrated RMNCH and Nutrition Program, Primary and Secondary Health Departments of Government of Punjab. And we see today from the presentation, the pilot showed effective coverage and high levels of adherence, as well as acceptability by the many stakeholders involved, including adolescent girls and their families, as well as those involved in the direct delivery of the program. And given the success of the pilot, we know that this work is now extending and scaling out to new geographies, 2 tehsils in Danyapur and Korapaka, District of Lodram, Punjab, 1 in District of Swabi and Khyber Pakhtunkhwa, and District of Pishin and Balochistan. And this morning, I'll now share how this fits into our broader global work as well.
So Nutrition International is committed to improving the nutrition and health for adolescents, especially adolescent girls. And why adolescent nutrition? We know that the adolescent population globally is growing. We've never had more adolescents on the planet. अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, इन्होंने लोधरा में इसको इम्प्लीमेंट करवाया कि वीकली उनको जो हमारे एडोलेसेंट बच्चियां हैं उनको आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट दे रहे थे और इसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो एनीमिया की प्रेवलेंस है 54% है हमारी ख़वातीन में, तो उसको एड्रेस करने के लिए हंगामी बुनियादों पे काम करना पड़ेगा। तो एक स्टेप ये है, लेकिन हम इसको स्केल अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ताकि मुकम्मल जो हमारी पॉपुलेशन है और बच्चियां हैं जो एडोलेसेंट है एडल्टली, उनकी जो एनीमिया की सूरत हाल है वो रिवर्स हो सके। और सर, मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन से फाइट करने के लिए आप हमारे हाउस होल्ड फैमिलीज़ को क्या सजेशन देंगे? अच्छा, सबसे पहले शुरू होती है बच्चे की दूध से, जो माँ का दूध है उससे। सबसे पहले तो माँ अपने, और ये कुरान पाक में भी है कि आप 2 साल तक अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। उसके साथ साथ अब फिर कम्प्लीमेंट्री फीड की बात आ जाती है, फिर इम्यूनाइजेशन की बात आ जाती है, फिर उनकी जो साथ में बैलेंस डाइट है उनकी। तो ये एक कंटिन्यूम है जिसको पेरेंट्स को और फैमिलीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि सेहतमंद बच्चे आ सकें। इवेंट के इख्तिताम पे ऑर्गेनाइजर्स, रिसर्चर्स और चीफ गेस्ट को शील्ड से नवाजा गया और ग्रुप फोटो के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ।